So let us start with the chapter development. To start off that day, I told you that the word development, it has different ideas, different aspects. लेकिन हम लोग अभी जो है we are only dealing with economic development. That means different perspectives on development and ways through which we can achieve these. Yes, for each of the development, whether it is a development in an area, whether it is a development in a society, we have something which are common. Whereas for different people, it might cater to different goals. So, सबसे पहले what you have to do is understand what development is. Then, since we are dealing with the development in economic sphere, so we also need to understand how countries or states to be compared using some selected development indicators. Then economic development can be measured and income is the most common method for measuring development. However, the income, though it is good, one of the question, but it has several weaknesses because it doesn't tell about an overall development. For example, I'm just giving an example that even if you look into a vegetable vendor, he might be earning around 30,000 per month. And a person who is working in a small company might be earning the same thing. तो फिर तो दोनों ही rich हुए. Then why do we categorize them? This is because there are some other indicators. Besides income, we also need to have certain other indicators. So for that, we need to understand what are the terms like per capita income, literacy rate. These are all one marker question class 10th. ये सब कुछ वन मार्कर में आता है. या तो आपको डेफिनेशन दे के आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, या वाइस वर्सा इसका मतलब कि व्हाट इज अ डेफिनेशन फॉर इट. एंड समटाइम्स 3 ऑफ देम टुगेदर एक बार आया हुआ है, 3 मतलब आपको दे दिए एंड यू वर आस्क्ड टू डिफाइन इट इन 3 मार्कर. IMR, अटेंडेंस रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस एनरोलमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट. तो ये हमारा जो डेटा है इनको हम लोग लेते हैं. वी हैव अ कंसेप्ट व्हाट वी कॉल एज परचेसिंग पावर पैरिटी. मतलब व्हाट डज इट मीन? परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि व्हाट इज द इनकम एंड हाउ मच दे कैन स्पेंड. बिकॉज इनकम एंड स्पेंडिंग दोनों जो है वो बैलेंस रहना चाहिए. एंड एज आई टोल्ड यू दैट डे, उस दिन आपको मैंने बताया था दैट ओवरऑल इंडिया के अंदर से द सर्वे, आपका जो नेशनल सर्वे है वहां से वी टेक अप ऑल द डेटा and then it is further transformed to many agencies including United Nation. आपका जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनको दिया जाता है, जहां से दिस इज आपका UNDP एंड देन दे मेक अप एन ओवरऑल व्हाट यू कॉल एज एक इंडेक्स बनाते हैं और उस इंडेक्स में बताते हैं कौन सी कंट्री किस लेवल पर है. So this is what we will be reading in this. The idea of development or progress has always been with this. If you look into the era जब ये world या जो मतलब की धरती है when it evolved और आज how many things are there. We have aspirations or desires what we would like and how we would like to live. Then what a country should be like. उस दिन आपको मैंने कंपैरेटिव स्टडी बताया था. इफ यू आर गोइंग टू US, UK, देन चाइना, थाईलैंड, इंडिया, देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स.
तो क्या all the countries are similar? Can there be more equality? Development involves thinking about these questions and about ways through which we can achieve the goals. This is a complex task. यहाँ तो हम सिर्फ एक चीज लेते हैं, and when you study in the further areas, like if you are going for economics, statistics, or you may be going for certain, there are मतलब कि आपका actuarial science करके एक मतलब subject आता है, actuarial science, which is very 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 important. बहुत कम लोग उसको करते हैं, but if you do it, then there is no look back. तो वहां हम इन चीजों को लेते हैं, and then we calculate, then we come to a conclusion. तो whatever you have done, you have to understand आपका हिस्ट्री क्या रहा, पॉलिटिकल साइंस क्या रहा. हमारी कंट्री, as we know, it was not a in an independent country. It was of course under the colonized. No doubt, हम ऐसा नहीं कि हम colonized थे तो we did not get any benefits. We got many benefits, but there were some drawbacks जिसकी वजह से जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए था या हो सकता था, that we could not achieve. That particular day I told you, the first question which you may get is different people, different goals. And this is the one I gave you the example also. A landless labor may have, अगर जिसके पास landless labor है, जिसके पास land नहीं है, वो कहेगा better wages. Prosperous farmer जो है वो कहेगा कि उसका जो अभी जो इन दिल्ली देयर वाज अ किसान का वो भी चल रहा था मूवमेंट, इट वाज द सेम थिंग. उनको चाहिए था एमएसपी, यानी कि जो सपोर्ट प्राइस है वो ज्यादा होना चाहिए. उनके बच्चों को वो लोग बाहर भेजें. सिंस इन पंजाब दिस एजुकेशन इज स्टिल नॉट दैट, मतलब नॉट टू मार्क. फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वो लोग क्या मांगेंगे? डेफिनेटली दे वुड से कि बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, ट्यूब वेल्स. अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, जिसके पास ओन है लेकिन वो रूरल में है, उस वो एजुकेशन मांगेगी. अर्बन अनएम्प्लॉयड, अर्बन मतलब जो लोग शहर में रहते हैं, दे वुड से हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाए या हम अपना बिजनेस सेट करें. अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन, मोर फ्रीडम. अ गर्ल, maybe she desires freedom as her brother is doing. An Adivasi from Narmada village. नर्मदा वैली के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर जो अभी जो डैम बन रहा है उसकी वजह से मेनी ऑफ द आदिवासीज आर शिफ्टिंग टू अदर प्लेसेस. वो कहेंगे कि दे नीड लैंड. दैट मीन्स वी आर ऑल इंडियंस बट वी हैव डिफरेंट गोल्स. तो द वेरी फर्स्ट इज डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स. उस दिन आपको क्वेश्चन बताया था कि व्हाट डज इट मीन. ये रहा, दिस इज द क्वेश्चन विच हैज कम इन द एग्जाम. वन पर्सन, एक जमीन है. अ रिच पर्सन वुड से कि आप इस जमीन को मुझे दे दो, आई वुड डेवलप इंडस्ट्री. एंड अ पुअर पर्सन वुड से यू गिव दिस, आई डेवलप एग्रीकल्चर. दैट्स वन. और हो सकता है कि एक गोल जो एक के लिए अच्छा हो दूसरे के लिए ना हो. Having filled the table, let us now examine, do all the persons have the same notion of development? No. Each one of them seek different things. They seek things that are most important. For example, you are four. And if I ask all of you, you might be having this different expectations. If I ask one child, he or she may say, ma'am, I need this as a development. If I मुझसे पूछा जाए, I would say each child who is studying should get a better education. They should be having the reality, and this is reality because I have faced the trauma. Then there should be ample colleges where the children are getting the admissions, not because they belong to a category, but they should be
unbiased. There should be some, area where they are able to express themselves. Maybe मेरा जो है, that may not be for somebody else. Two persons or two groups may seek things which are conflicting. यही आपका पेपर का क्वेश्चन है कि conflicting मतलब मैं जो चाहती हूँ दूसरा नहीं चाहता होगा. Other person may not be having this aspiration what I have. A girl expects as much freedom and opportunity as a brother. Boys काम नहीं करते normally, तो बोला जाता उन्हें भी सिखाओ. And similar, and but her brother will not like this. Similarly, to get more electricity, industrialists कहेंगे dams बनाओ. But this may submerge the land. डैम्स बनाने से क्या होता है, वहां जो लैंड होती है वो डूब जाती है. समटाइम्स वहां जो लोग रहते हैं, जैसे नर्मदा वैली, वहां के लोगों को माइग्रेट करना पड़ता, उनको अपना जो काम है उसे छोड़ना पड़ता है. सो दे मे नॉट, they might resent this. They may prefer small check dams or tanks. So two things are clear. Different peoples have different development goals. बेटा ये explain करने को आता है आपको, तो आपको इसके अंदर एग्जाम्पल देना है. जैसे बॉय एंड गर्ल का दे दिया, रूरल या अर्बन का दे दिया. एंड दूसरा है what may be the development for one may not be the development for other. It may be even destructive. जैसे ये फोटो बनी है, those people don't want to develop. हम चाहते हैं हमें मतलब कि रोड्स मिले, वो लोग चाहते हैं उन्हें घर मिले. That's a difference. So you are not wrong, but they are also not wrong. आप गलत नहीं हो. इंडस्ट्रियलिस्ट अगर कहते हैं कि दे वांट डैम्स दे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर राइट. अब भाई अगर इंडस्ट्रीज होंगी तो डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज मोर मतलब कि पॉसिबल. बट देन व्हाट अबाउट द रूरल एरियाज, द पीपल हु डोंट नो एनीथिंग एल्स, जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट है ऑन एग्रीकल्चर. व्हाट टू डू विद देम? नाउ the very next question is, for all of us, the common indicator is income. You ask anyone, the first thing anyone would say is income. यानी कि income is a common criteria. A laborer, a vendor, an industrialist, or a farmer. You will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages, decent prices for their crop or the product they produce. यानी कि everyone wants income. It's a common one. Income सबके लिए है, whether it is a big time shopkeeper or a small time. Besides more income, but income is not as मतलब कि the only criteria. People also seek equal treatment, freedom, security, respect of others, resent discrimination. In some cases, they may be more important than more income or more consumption, because material goods are not all you need to live. This is the one which has come in the paper once. जरूरी नहीं है कि आपके पास गाड़ी है, बंगला है, तो you are मतलब कि that is the only thing for development. Besides income, you also need respect, dignity, freedom. As I gave you the example of a vendor and a person who is working in an office. Equal treatment. Money or material things that one can buy is one factor on which our life depends. यानी income एक factor है, but उसके अलावा life also depends on non-materials. Just think of the role of friends in your life. You may desire friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured but means a lot. These are often ignored. However, it will be wrong to conclude what cannot be measured is not important.
जैसे आपको कहीं दूर मिल रहा है, आई हैव अ रियल लाइफ एग्जांपल। वन ऑफ माय नोन टू पर्सन, हमारे जान पहचान में एक मतलब कि नोन टू पर्सन से, उनमें एक, देवर पोस्टेड इन नाइजीरिया। अब नाइजीरिया जो, जहां वो पोस्टेड थे, डेफिनेटली ही इज वेरी हाई अथॉरिटी डॉक्टर, एंड ही वाज वर्किंग विद डब्ल्यूएचओ। तो इनकम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दे हैड इवन बीन गिवन अ कंप्लीट हाउस, एवरीथिंग। But the main problem what he faced was after 7 p.m. at Nigeria, people cannot come out. Even if you come out, himmat karke, you would be ripped off of even your clothes. आपके कपड़े भी आपके बदन पर नहीं बचते वहां। वहां इतना रॉबरी, थेफ्ट एंड मतलब कि लूटपाट है। So do you think that if you get income, you can live in such a place where there is no safety, there is no security? इज इट पॉसिबल? वहां आफ्टर 7 p.m. द मिलिट्री जो है वो पैरा देती है, द शॉप्स आर क्लोज्ड, पीपल आर नॉट सपोज टू मूव, बट अगर कोई इक्का दुक्का मूव करता है, देन देयर माइट बी चांसेस ऑफ लूटिंग. So do you think only income is the criteria? I gave you the example of many of the agricultural people. अगर आप उनके जमीन को देखोगे, if you look into their agricultural land, they possess land than what we all are having. Still, we don't call them developed because when you go there, you don't find the hospitals, schools, or good roads, sanitation. So these are all also the criteria. If you get a job in a far off place, before accepting, आप क्या क्या देखोगे? Income, facilities for your family, working atmosphere, opportunity to learn. Then a job may give you less, but regular employment, sense of security. Yani ki another job may offer high pay, but no job security and also leave no time for your family. Yani not only money, but also the other factors are very important. Similarly, for development, question of exam, people look at mix of goals. Means it is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. But it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework, great acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up variety of jobs or run a business. That means developmental goals that people have are not only about better income but other important things. This is the question. Give some examples where factors other than income are important aspects of our lives. Bhaiya, when the women are going out, what happens? Definitely, when they go out, they have to work. वर्क करते हैं, they get the salary, but most of the time it is a proven thing, they come back, they have to do all the household work. घर का काम तो फिर औरतों को ही करना है. Then how it is possible if a male is going out, if he is going out, तो उनको घर में आकर चम्मच नहीं हिलाना, but if a woman is going out, she has to come and give. So how it is possible that she would work? That means she needs respect, dignity. If the work is shared, if someone is there to care for her, definitely add भी होगा income and आपके aspirations भी पूरे हों. So this is what people look at mix of goals. This is the question number 3. नेक्स्ट इज, अभी तक हमने पढ़ा इंडिविजुअली हम लोग क्या कहते हैं डेवलपमेंट को. इनकम इज द मेन क्राइटेरिया, बट देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो.
Some people may be having same goal, some may be having different. Now, what do we understand by national development? Why do we call one country developed, another underdeveloped? Most likely, if as we have seen, individuals seek different goals, their notion of national is also to be different. Most likely, you would find that different students have given different answers to the above question. It is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development. That's very common. Even if जैसे मैंने आपसे बोला कि if you ask me about education, for me education is not schooling. It is also till when you are studying. Good atmosphere, good schools, good colleges, affordable fees, a uniform curriculum. I have, but many of the people do not think on that ground. It doesn't mean that they are wrong or I'm wrong. However, can all the ideas equally be important? Then who is going to decide कि भाई कौन सा country right है कौन सा नहीं है? National development इन्हीं को कहते हैं. This we will do in the later when we are doing the question. You might ask if development can mean different things, how some countries are called developed, others underdeveloped. When we compare different things, there could have similarities as well as differences. For example, हम बच्चों को करते हैं. They differ in height, health, talent, interest. जो healthiest है वो सबसे studious नहीं होगा और जो सबसे studious है वो friendliest नहीं होगा. There are many criteria. That means there is nothing like कोई होगा जो स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, कोई डिबेट में अच्छा होगा, कोई ऑर्गेनाइजिंग में अच्छा होगा. तो व्हाट टू डू? मतलब हर कंट्री में कुछ ना कुछ अच्छा होगा. तो हाउ डू वी कैरेक्टराइज कि एक बेसिक यही होना चाहिए? Usually, we take one or more important characteristics of persons and compare them on these characteristics. Like maybe किसी एक जैसे डिबेट है तो डिबेट के लिए फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, मार्क्स होने चाहिए. फॉर स्पोर्ट्स उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए. यानी कि हम क्राइटेरिया रख देते हैं. अ पर्सन हु हैज टू बी इन डिबेट और ऑर्गेनाइजिंग उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए, जो स्पोर्ट्स में उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए. बिकॉज ऑल द क्वालिटीज कैन नॉट कम इन वन सिंगल पर्सन. और अगर कोई होगा भी तो that person might be a unique. This is true for development also. For comparing countries, their income is considered as the most important attributes. Countries with higher income are more developed than less income. This is based on the understanding that more income means all the things that human beings need. Whatever people like, they can have. क्योंकि भाई पैसा होगा तो चीज खरीदेंगे. So greater income is considered to be one of the important goals. Now, what is the income of a country? Intuitively, the income is the income of all the residents. तो अब हम सबकी residents की income कहाँ से आती है? अब एक घर के अंदर there might be 3 people working, in some house there might be one person working. How do we compare it? However, for comparison, total income is not such an useful measure. Since countries have different populations, comparing total income will not tell what an average person is likely to earn. इसीलिए हम एक एवरेज लेते हैं. मतलब नाउ वी डोंट नो, इन अ हाउस देयर माइट बी 3 पीपल. आपके घर में 3 लोग कमाते होंगे, मेरे घर में एक कमाता होगा. वाइस वर्सा, मेरे घर में 4 लोग कमाते होंगे, आपके घर एक कमाता होगा. तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज ले लेते हैं बिकॉज वी डोंट नो. एंड देर आर सो मेनी एरियाज जहां हम पर कैपिटा इनकम को ऐड ही नहीं कर पाते हैं. सम ऑफ द हाउस होल्ड इनकम्स आर नॉट एडेड. Hence, we compare the average income, which is the total income of the country divided by its population. It is also called per
capita income. One of the most important concept from this one. आपको न्यूमेरिकल में भी आ सकता है और you may be asked to write the formula. What is the other name for average income? Per capita, PCI. And what is the formula? Total income upon total population. In World Development Reports, which is brought by the World Bank, this criteria is used to classify countries. As per the data of 2019, US dollar 49,300 per annum and above are called high income. Then 2,500 and less are called low income. India comes in the category of low middle income because of its per capita in 2019 was only 6,700. The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are often called as developed countries. क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर आपका ऑयल फॉर्मेशन है, तो दे ऑल कम अंडर द डेवलप्ड कंट्रीज. दिस इज द वन. एक बॉक्स जो आपके बैक में भी ऐसा एक क्वेश्चन दिया हुआ, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th, एंड आपके पेपर में आता है कि वाई इज एवरेज जो है इट इज नॉट राइट. यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है while averages are useful for comparison they also hide disparities. अभी मैंने कहा टोटल पॉपुलेशन. अब हमारा टोटल पॉपुलेशन कितना है? 1.4 बिलियन. तो क्या हर एक मतलब कि जो इंसान है वो कमा रहा है? छोटा बच्चा जो पैदा हुआ वो भी कमा रहा है, और जो 80 साल का बूढ़ा है वो भी कमा रहा है? इज इट सो? इज इट सो? No, it is not. Not everyone is earning. And then are everyone contributing equal income? मतलब if a person who is in living in urban, अगर वो 1,000 रुपए कमा रहा है तो क्या रूरल वाला भी 1,000 ही कमा रहा है? No. This means it hides the disparities. जो डिफरेंस होता है इनकम का. उस दिन आपको मैंने एक आई हैड गिवन यू वन एग्जांपल दैट अगर हम 4 जने हैं बट कंट्रीब्यूशन हैज बीन डन ओनली बाय 3, लेकिन हम कह रहे हैं क्लास 10th ने इतना कंट्रीब्यूट किया. हो सकता है उसमें से 2 बच्चों ने कंट्रीब्यूट नहीं भी किया था या कम किया था. दैट इज द डिस्पैरिटी. अब यहां पर ये देखिए, दिस इज द टेबल. इफ यू सी कंट्री ए, कंट्री ए में 5 सिटीजन्स को उन्होंने लिया है. दिस इज अ क्वेश्चन विच कम्स इन द एग्जाम. देर आर 5 सिटीजन्स एंड द टोटल इनकम इज 9,500, 10,500, 9,800, 10,000 एंड 10,200. यानी कि टोटल इनकम कितना हो गया? 50,000. The total income is 50,000. 10,200 and 9,800 is 20,000 plus 10,000, 30,000, 40,000 and 10,000, 50,000. Now, जो कंट्री बी है उसमें भी एवरेज इनकम 50,000 है, लेकिन वहां पर एक सिटीजन 500 रुपए, 4 सिटीजन 500 रुपए कमा रहे हैं, सिर्फ एक सिटीजन है जो 48,000 कमा रहा है. So can you call both these countries as developed? क्योंकि दोनों में एवरेज इनकम 50,000 है. कैन यू कॉल इट? क्योंकि दोनों में एवरेज इनकम, कंट्री की तो इनकम 50,000 है ना, लेकिन जो डिस्पैरिटी है यानी कि लोगों का जो है, मतलब यहाँ पर दिस पर्सन इज अर्निंग 500 बट दिस पर्सन इज अर्निंग 48, वेयर यहाँ पर सबकी इनकम तकरीबन सेम है. इट इज मोर और लेस सेम. So this is the disparity that normally PCI यानी कि एवरेज इनकम जो है वो छुपा देता है. That means the income of the real income is not shown.
if you look into the back questions, you will have this question, ये रहा. This is the question which you have to, take out. आपको करना है. The one same जैसा आपका था. इसमें आपको 4th person का एवरेज इनकम बताना होगा. This is a very common question. And then this is the one which I told you. What is the criterion taken by World Bank? What are its limitations? And then same question है 6th question, 4th and 6th आपका same है. Why do we use averages? Are there any limitation? Illustrate with your example. तो जो एग्जाम्पल आपने अभी जो हमने बॉक्स वाला किया है दैट यू हैव टू टेक अप. तो दिस इज आपका एवरेजेस. यानी कि एवरेज से हम लोग एक जनरल इनकम को तो आइडेंटिफाई करते हैं, बट एग्जैक्टली एक एक इंसान कितना कर रहा है, वेदर देयर आर डेवलपमेंट इन अदर एरियाज, क्या वो हमें पता लग रहा है? नो. When we looked at individual aspirations and goal, we found people not only think of better income, but also goals as security, respect for others, equal treatment, freedom. Similarly, when we think of a nation, besides average, there are other attributes. This is a question which has come in the exam, and I think it is there in the back also. Let us examine. यहाँ पर आप देखो, हरियाणा का जो इनकम है वो है 2,36,147. केरला हैज अन पर कैपिटा इनकम ऑफ 2,04,000 and Bihar has 40,982. अब इस डेटा के अकॉर्डिंग तो हमारा हरियाणा इज द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट, बट इज इट डेवलप्ड इज द क्वेश्चन. Actually, these figures are of per capita net state domestic product. Now, let us ignore what the complicated term exactly means. Roughly, we can take per capita of the state. So, Haryana has the highest and Bihar has the lowest. यानी कि in Haryana, the average एक इंसान जो कमाता है वो है 2,36,000. Whereas in Bihar, it is 40,000. If person per capita were to be used as a measure, Haryana will be considered the most developed and Bihar least. अब यहां पर देखो, come to the next one. हरियाणा के अंदर infant mortality rate, these are the definitions beta I had given you that day. Infant mortality rate matlab the number of children who die before reaching 1 year in proportion to 1,000 live birth. And literacy rate is the child above 7 years who can read or write any one language with understanding. And net attendance ratio is this graph can come as a question in your exam. Net attendance is the number of children between 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group. यानी कि आप सबका एवरेज, आप लोग सब 14-15 ईयर्स के ब्रैकेट में हो, तो 14-15 साल के बच्चे अक्रॉस इंडिया, मान लो दिल्ली के अंदर 100 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग एंड टोटल हमारे इंडिया के अंदर 1,000 बच्चे हैं. तो दैट मीन्स इन दिल्ली के अंदर कितने बच्चे, मतलब कि कितना है, 0.1% बच्चे ही अटेंड कर रहे हैं. हम ऐसा लेते हैं, आएगा नहीं, जस्ट आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल. सो वी कैलकुलेट इट इन दिस मैनर. तो नाउ इफ वी कम टू हरियाणा, हमने ऊपर पढ़ा हरियाणा इज द मोस्ट मतलब कि डेवलप्ड स्टेट बिकॉज वहां पर कैपिटा इनकम बिल्कुल सही है, राइट. लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि बच्चे जो 1 साल से पहले मर जाते हैं. क्यों मर जाते हैं? बिकॉज देयर इज लैक ऑफ हेल्थ सिस्टम, इम्यूनिटी, आपके वैक्सीन, राइट. तो इन हरियाणा इट इज 30 बच्चे मर जाते हैं. इन
बिहार इट इज 32, यानी कि सबसे ज्यादा जो आईएमआर है, हाई आईएमआर है, वो है बिहार में। राइट, वहां ज्यादा बच्चों की डेथ होती है। नाउ कम टू लिटरेसी रेट इन बिहार, इट इज 62%, यानी कि लोएस्ट। इन हरियाणा इट इज 82%, बट if we look in Kerala, it is 94%। यानी कि सबसे ज्यादा कहां पर है? केरला में। यानी केरला हैज द लोएस्ट infant mortality rate and highest literacy rate. नाउ कम टू नेट अटेंडेंस रेशियो, जो बच्चे स्कूल जाते हैं 14-15 ईयर्स के उसमें। इन बिहार अगेन इट इज लोएस्ट 43, then 61 in Haryana, but again in Kerala it is 83। तो अब बताइए इन तीनों में से कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा डेवलप कहलाएगा? हरियाणा, जहां पर कैपिटा इनकम ज्यादा है लेकिन आईएमआर कम है, लिटरेसी रेट कम है। आईएमआर मतलब ज्यादा है, लिटरेसी रेट कम है, नेट अटेंडेंस रेशियो कम है। या फिर केरला वेयर इनकम इज लेस, कंपैरेटिवली थोड़ा सा लेस है, 2,04,000, लेकिन वहां पर आईएमआर इज लो, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस इज हाई। तो नेचुरल है कि केरला हैज बेटर डेवलपमेंट एंड बिहार इज नॉट हैविंग। बिहार में इनकम भी कम है, आईएमआर भी ज्यादा है, लिटरेसी रेट भी कम है, और नेट अटेंडेंस रेट भी कम। So that is why Haryana, even having a high per capita income, cannot be called as developed. ये आपका पेपर का क्वेश्चन है। I think it is there in the given at the back also. Here, seventh question. This is the same question. Kerala with low per capita income has a better human development than Haryana. So per capita is not a useful criteria. Do you agree? मतलब वहां पर इनकम तो ठीक ठाक है, 2,46,000 है, बट इफ यू सी अदर थिंग्स, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब कम है। तो डेवलपमेंट इज नॉट ओनली इनकम, डेवलपमेंट ऑल्सो हैज अदर एट्रीब्यूट्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन एक्सेट्रा। व्हाट इज दिस टेबल शो? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, ये सारा मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। व्हाट इज आईएमआर, हरियाणा में कितना है, केरला में कितना है। सो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विथ आईएमआर, इट शोज इन बिहार students are not attending class beyond 8. This means if you went to school in Bihar, आपके आधे बच्चे क्लास में होंगे नहीं। That those who could not have, those could have been in school are not there. What will happen? That means in Bihar, the literacy rate is less. And why IMR आपका ज्यादा होता है? Because most babies do not get the basic health care. मदर को इम्यूनिटी नहीं मिलती, वैक्सीन्स नहीं मिलते, बच्चों को हेल्थ केयर नहीं मिलता, एंड दैट इज व्हाई दीज काइंड्स ऑफ, या तो वो बीमार हो जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती। How is that average person in Haryana has more income than an average person in Kerala, but lags in crucial areas? The reason is paper's question. Money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live. अभी आपको मैंने वो जो एक वेंडर का एग्जाम्पल दिया था कि अ वेंडर में बी अर्निंग 30,000 एंड अनदर पर्सन में बी अर्निंग, लेकिन फिर हम किसको डेवलप कहते हैं? द पर्सन हु इज वर्किंग इन एन ऑफिस, क्योंकि उसके पास रहने के लिए सही जमीन होगी, सैनिटेशन होगा, पानी होगा। So income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services citizens are able to. Normally, your money cannot buy you a pollution-free environment.
and ensure you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has these things. Money may also not be able to protect you from infectious diseases unless the whole of your community takes preventive steps. अगर आपके जैसे कोविड था तो कोविड was prevalent in all the people. बट बाद में जिन लोगों ने बूस्टर्स लगवा लिए थे, नो डाउट उन लोगों में वहां पर कम हो गया था, बट जहां ये फैसिलिटी नहीं थी वहां दोबारा अटैक हुआ था। इंडिया के अंदर इनिशियली 1950s तक, इनफैक्ट 70s तक, इंडिया वाज कॉल्ड एज व्हाट वी से अ टीबी नेशन, ट्यूबरकुलोसिस नेशन। दिस इज बिकॉज वी वर नॉट हैविंग इनफ वैक्सीन, बट लेटर ऑन ट्यूबरकुलोसिस एज वेल एज पोलियो को इरेडिकेट किया गया था। तो जब तक सिर्फ इनकम ही नहीं, आपको ये एनवायरनमेंट भी मिलना चाहिए। एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द, इसमें इस बारे में आपको आंसर लिखना, मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय में आपको लिखना है, मनी कैन नॉट बाय पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, इट कैन नॉट गेट यू अनअडल्ट्रेटेड मेडिसिन, इट कैन नॉट गिव यू एन मतलब कि नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब इनसे बच नहीं सकते हो, ये लिखना है। Actually, for many of the important thing, the best way also is cheapest way. Uh, that particular day I told you कि we have ample healthcare centers. कल ही न्यूज़पेपर में एक बहुत ही बड़ा, there was one scam in Gurgaon. In Gurgaon, a play school. I don't know if you have read that news or not. It was there in the news. गुड़गांव के अंदर एक प्ले स्कूल का ईयरली फीस जो है वो है 5 लाख रुपीज समथिंग, मतलब 3 महीने का फीस 1 लाख रुपए है पर मंथ, 35,000। प्ले स्कूल, आई शेयर इफ आई गेट दैट न्यूज, सिर्फ प्ले स्कूल का 35,000। तो do you think everyone can offer 35,000 rupees per month for a child who is in play school जो अभी 2.5 साल का है? So what will happen when the child comes to 10th standard? As I said, in India, the main thing, because we have undergone this trauma, that's why I'm telling you. You go to the medical colleges, कितने बच्चे होते हैं, those who really want to become doctors and they are having the capability. But what is the fees of a medical college? We have around 800 colleges in overall. I think it was in 9th standard में था आपका ये वाला. And out of that 800 colleges, hardly 80 to 90 are government colleges. जहां आपके फीस it is something like 5 to 10, 5-7 lakhs के बीच में आता है. बाकी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी ईयरली फीस इज अराउंड, आई एम टेलिंग ऑन अ वेरी वेग वन, मुझे अभी इस वक्त इस तरह का नहीं पता है, इट इज अराउंड 25 लाख रुपीज पर ईयर। यानी अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको 1,25,000 तो फीस जमा करनी है। फिर जो आप पीजी में रहोगे, वो जो इंस्ट्रूमेंट खरीदोगे, वो सब एक्स्ट्रा है। तो डू यू थिंक दैट, हमारे यहाँ तो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज होने का फायदा क्या, उसमें एडमिशन कौन देगा? 1,25,000 एंड देन इफ यू वांट टू, अब आप सोचो आप एमबीबीएस बन गए तो क्या आपके पास पेशेंट्स आएंगे? नो। डू यू गो टू अ डॉक्टर जो जिसने अभी भी पढ़ाई की है फॉर एनी हार्ट एलिमेंट? नो, यू विल गो टू कार्डियोलॉजिस्ट। नाउ टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट अगेन यू हैव टू स्पेंड समथिंग अराउंड 1 crore rupees, because you don't have the public or government colleges, और जो है वो कम है, सीट्स कम है। तो डू यू थिंक दैट इट इज राइट? अब जिस इंसान ने आज 1 लाख रुपीज पर मंथ, वो जो है 35,000 रुपीज पर मंथ जो दे रहा, विल ही बी एबल टू गिव दिस? नो। तो जस्ट थिंक of the goods and services collectively. अब this is government's
ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए. एजुकेशन, हेल्थ, दे शुड बी अफोर्डेबल. यू गो टू मैक्स, स्टे देयर, 5 स्टार ट्रीटमेंट. मजा आता है वहां पे रहने में, ऐसी कोई बात नहीं. मैं एक दिन अभी, जब मेरा जिस दिन आई हैड माई सर्जरी, all the nurses were there with me. Ma'am, do you want this? Ma'am, do you want this? It was looking as if I'm the celebrity. But उन्होंने एक दिन के ही 1 लाख रुपए ले लिए थे मुझसे. So is it possible that everyone is getting that benefit? No. For a poor person, for a rural person, what if no one other than you in your village or locality is interested in studying? Would you be able to study? Not unless your parents could afford to send you to some private school elsewhere. So you are actually being able to study because many other children also want to study, because many people believe government should open schools and provide facilities so that all the children have a chance to study. And for me, it is not only opening the school, it should be quality education. Why don't we go to a government school? Why do we spend lakhs of rupees in a private school? The reason is quality. Even now, in many areas, children, particularly girls, are not able to go to high school because the society or government has not provided adequate facilities. वहां पर toilets नहीं है. They don't have, they have to go to the open toilets. So they say, we will not send our girls. Kerala has low infant mortality rate because it has adequate provision of basic health and educational facilities. I already have explained this. Again, the same thing. In some states, the PDS functions well. Health and nutritional status of people of such state is certainly likely to be better. PDS क्या होता है now? It is written in only 1%. But it is, ये आपका question है. This is the question. In Tamil Nadu, 90% of the people living in rural use a ration shop. मतलब वहां easily available है. And I'm belonging to Tamil Nadu, so I can, prove this कि yes, it is there. But in West Bengal, only 35%. इससे क्या होता है? व्हाट इज पीडीएस? पीडीएस इज आपका राशन. आप लोगों ने फूड सिक्योरिटी पढ़ा होगा इन क्लास 9. तो पीडीएस इज आपका राशन सिस्टम, जहां पर आपको फूड आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, केरोसिन, शुगर, ये सब आपको कम में मिल जाता है. तो व्हाट हैपेंस इज poorest of the poor is also able to buy that. A poor person may not be buying a 1 kilo rice from the local market for 80 rupees. लेकिन अगर उसको वो 8 रुपए में मिल रहा है तो एटलीस्ट ही विल बाय. तो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो गवर्नमेंट है, इट शुड ओपन स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स, देन राशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट. ये सब हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. All these kinds of datas will be part of your paper. They will be part of your paper. Now, the last one which we would be doing is BMI. उस दिन आपको BMI बताया था. अपना BMI कैलकुलेट करके रखना. I'll ask in the next way. I'll see who is healthy. One way to find out, मतलब हमने ऊपर पढ़ा पीडीएस में, पीडीएस से इंसान का जो खाने पीने का जो कैलोरीज कंजम्पशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर हाइट एंड वेट, दैट ऑल्सो डिटरमाइंस, क्योंकि दैट इज अ वे वी वुड बी एबल टू वर्क प्रॉपरली. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर measuring the BMI? It is when we are taking the weight of each and height in meters. Height हमारा meters में होगा. And then we would be calculating it on an average. A student's BMI could be within normal or less than underweight or more. For example, a girl student is 14 years, 8 months, and the BMI is 15.2. तो 15.2 इज लेस. उस दिन आपको बताया था 18 से कम होता है तो malnourished, 18 से 24.9 तक आपका हेल्दी, 25 से 27.9 तक आपका ओवरवेट, एंड अबाउ दैट इज ओबीज. दैट्स अ वर्ल्ड आपका जो
WHO है वो उन्होंने बताया। सो दिस इज हाउ जो आपका BMI है वो भी इट बिकम्स, बिकॉज BMI अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो what will happen is if you are undernourished then of course you are going to be, the person is prone to be illness। और अगर overweight है वो भी एक illness का कारण है। Overweight is the reason for obesity, diabetes and even other many other ailments। Then we have to spend more money on medicines rather than our own self। तो वो भी हमारे लिए जरूरी है। तो in another way, health, nutrition, education, public facilities, all of them are important besides income। So that is what we have done today। In the next class, of course, we would be reading about these data जो हमने पढ़ा है आज, health, education, इसको UNDP कैसे कंपाइल करता है, कैसे हमारे कुछ पड़ोसी देश हमसे कम है, कुछ हमसे बेटर है, क्यों बेटर है, then what is the concept of sustainable development and why we need a sustainable development and what kind of questions you can get from this particular concept। I also told you one thing that ये जो आपका sustainable development है, this will be a common question for this chapter as well as the first chapter, resources and development from geography। So this is one of the important concept, and in both the chapters they are very important। So that is what we say about development।